So you must have noticed that I've been reading a lot of books written by Leigh Bardugo recently, and because of her Six of Crows duology, because of her Grisha trilogy, Shadow and Bone trilogy. So when I got to know that she's coming up with a single book, it's going to be an independent read. So I immediately bought that book, and today we are going to review that book. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. जहां आज की बुक का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ली बार्डुगो के और भी जितनी भी बुक्स हैं, मतलब इससे पहले जो शैडो एंड बोन ट्रिलॉजी है, जिसे हम ग्रीशा ट्रिलॉजी भी कहते हैं, एंड ऑल्सो सिक्स ऑफ क्रोज डुओलॉजी, इनके रिव्यूज मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज वॉच दीज वीडियोस नाउ। आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पर भी। So this is the book, The Familiar by Leigh Bardugo. This is not going to have any sequel. This is an independent read. And so basically, this is set up in 12th century during the time of Spanish, Inquisition. Now, people who don't know what Spanish Inquisition is, तो उनको मैं बता दूं कि एक मास लेवल का कन्वर्जन किया गया था स्पेन में 12th सेंचुरी में, जहां पर जो जूस और मुस्लिम्स थे ना, उनसे कहा गया था कि इधर यू कन्वर्ट और यू डाई, या तो आप अपना धर्म बदलिए, कैथलिक बन जाइए, या फिर आप अपनी मौत के लिए तैयार हो जाइए। सो ड्यूरिंग दिस टाइम all those Jewish were targeted who actually got converted. मतलब वो डर के मारे कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन secretly वो अपना रिलीजन, उनका जो धर्म है, उसको फॉलो करते जा रहे थे। So The Familiar is actually story of one such Jewish scullion. She is actually she has some special powers. Basically, she can make fire dance, she can make flowers bloom, she can break things, she can create things, and but she keeps all her powers in check. She hides all her powers because of her Jewish past, and because she follows her religion secretly. And but one day her employer Valentina discovers her secret powers and asks Lucia. Lucia is the character's name, the main character. She asks Lucia to use her powers basically to entertain her guests. So इसके बाद लूजिया की पावर के चर्चे जो हैं वो पहुंच जाते हैं विक्टर के पास। नाउ विक्टर ना एक खानदानी रईस है जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि उनके पास अनलिमिटेड गुड लक है, जो उन्हें उनके साथ काम करने वाले एक स्पेशल इंसान से आता है जिनका नाम है सेंटनहेल। Now, Sentinel is described in the book as a very dark character. He's like a shadow. He has dark secrets. He has a darker past, and people are really scared to go near him. People are really, really scared. So, Sentinel actually gave his good luck a long time back to the Victor's family. It was a bad bargain, but he cannot get away from that bargain because every time he tries to run away from Victor's family, his destiny brings him back to the family every single time. So now Victor asks Sentinel to train Lucia. So Victor takes Lucia under his wing and he asks Sentinel to train her for a competition where more people like Lucia, people with special powers, they perform in a competition in front of the king, and whoever wins this competition gets very close to the king. And that's what Victor has in mind, because he wants to get close to the king, and that's why he wants to win this competition by hook or by crook. अब जो है सेंटनहेल लूजिया को ट्रेन करना शुरू करते हैं, और लूजिया को सेंटनहेल के साथ रहते रहते ये समझ आता है कि सेंटनहेल के बारे में जो लोग बातें कहते हैं वो सब अफवाहें हैं। वो उनकी गुड लक की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी गुड लक जो है खुद सेंटनहेल के लिए एक बैड लक बन के आई है, बिकॉज वो पास्ट में भी सफर कर चुके हैं, वो प्रेजेंट में सफर करते जा रहे हैं, और वो फ्यूचर में भी सफर करेंगे। सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टू थिंग्स हैपन. One, Sentinel and Victor both realizes that Lucia's power, if not controlled, if not directed in the right way, can prove to be extremely fatal, and they're dangerous. This power is dangerous, and as of now, Lucia lacks the ability to control her power. On the other hand, Lucia wants to win this competition to gain respect. क्योंकि लूजिया को क्या लगता है ना कि वो एक नौकरानी की तरह एक घर में काम करती हैं जहाँ उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, और उन्हें ट्रेनिंग के दौरान उन्हें
पहली तो प्यार हो जाता है सेंटिनहेल से, और सेंटिनहेल also falls in love with Luzia. Now Luzia realizes that the reason she wants to win this competition is to gain respect, but she will not get it because क्या होगा कि वो एक घर में जहाँ वो नौकरानी थी वहां से हटके वो एक दूसरे घर में जा रही है जहाँ वो विक्टर के कंट्रोल में होगी, and that's why she is a little hesitant to take part in this competition now. But unfortunately, her secret of being Jewish, that too a practicing one, comes out during the competition, and she's captured, she's tortured, and publicly execution का उनको order दे दिया जाता है उनकी execution का. And on the other hand, she also realizes that she might, the kind of feelings that she has for Sentinel might not have those feelings for her. Now, on the day of her execution, will Luzia be able to use her powers at the most crucial time? Will Sentinel be able to save Luzia at the right time? Will there be a happy ending to this story? For all these questions, you need to read the book, The Familiar by Leigh Bardugo. So the story of this book is very interesting. The plot is interesting. The characters are super interesting because that's what Leigh Bardugo's strength is. Even the most complex characters that she presents in the book, they are written so well. They are, almost you live those characters. But the execution lacks Leigh Bardugo's magical touch. First of all, Luzia's power really confuses you. बिकॉज एक तो क्या है कि अल्टीमेट कंट्रोल उनको अपनी पावर्स पे आता नहीं. अब वो क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड हैं, स्टोरी कंफ्यूज हो जाती है, कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं आपको, किसी भी कैरेक्टर को मतलब उतना वो ग्राफ नहीं मिलता. मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी में ना ली बार्डुगो को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, थोड़ा सा टाइम शायद और होता, मुझे ऐसा लगा. Because I think till now she's been writing sequels, like Shadow and Bone trilogy or Six of Crows duology. लेकिन क्योंकि this was one independent book, so एक ही बुक में पूरा प्लॉट डालना, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है, और उसके कैरेक्टर्स को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाना और फिर स्टोरी को आगे बढ़ाना, वो एक बुक में पॉसिबल नहीं हो पाया. सो फॉर मी दिस इज नॉट द बेस्ट ली बार्डुगो's book. If you are a Leigh Bardugo fan, and if you are not, and if you are planning to read a book by Leigh Bardugo, then please, I would suggest don't start with this one. She's written better books, really really cool books like Shadow and Bone trilogy and Six of Crows duology. So please read those books, and you can skip this one. But if you're a Leigh Bardugo fan and you've read her book, I will definitely say this is definitely a one-time read. You're going to enjoy because the kind of writing she has and the kind of stories she presents. They are unique. They are different. So you're going to enjoy it like a one-time read. But of course, I would say this is not as good as her other books because Leigh Bardugo का स्टाइल इतना अच्छा है, उनकी बुक्स इतनी अच्छी है ना कि वो स्टैंडर्ड भी अपने आप हाई हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं. पर ये बुक मेरे हिसाब से उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी मेरे लिए. So I hope you liked the review, and if you did, then please share it with all the book lovers you know. और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए.